Hello everyone, today we'll start a new chapter, My Unknown Friend. Okay. Chapter 12, My Unknown Friend. Theme stream, a man boards a train with an expensive suitcase and greets a stranger. एक मैन जो है वो ट्रेन में चढ़ता है, बहुत उसके पास एक्सपेंसिव से सूटकेस होता है और वो स्ट्रेंजर को ग्रीट करता है. ही प्रिटेंडेड दैट कि वो एक दूसरे को जानते हैं बट स्ट्रेंजर उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा होता है कुछ भी बारे में. प्रिटेंड्स टू रिकॉग्नाइज, वो कोशिश करता है कि वो उसको जानने की बट आज म्यूचुअल फ्रेंड्स के बारे में पूछता है, लेकिन एट द एंड स्ट्रेंजर डिस्कवर करता है एक मैन को वाज अ डिसीवर एंड दैट द सूटकेस एक्चुअली प्योर से बिलोंग करता है. Characters in spotlight. Narrator is a person who meets a stranger on a train but cannot remember him. Stranger, a man who pretends to know the narrator and the deceased. Suitcase owner, another passenger who claims the suitcase left behind by the deceased. The quest begins. He stepped into the compartment of the full man where I was sitting in. अब वो ट्रेन के कंपार्टमेंट में एंटर करता है जहाँ पर वो अकेला बैठा होता है. उसके बहुत ही लॉन्ग फर लाइन कोट उसने पहना होता है और उसके पास $50 का कैरी सूटकेस दैट ही हैड कैरिड आउट और वो सीट पर रखता है. देन वो मुझे देखता है. Well, he said, and recognition broke out all over his face like morning sun. तो वो एक दूसरे को बोला ऐसे बिहेव करते जैसे वो उसे अच्छे से जानता हो, जैसे पहचान लिया हो उसने. Well, I repeated. Hi, Joe. He said, shaking, उससे हाथ मिलाता है. Who would have thought of seeing you? मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें मिल पाऊंगा, मैं तुम्हें ऐसे हम मिलेंगे. Who? Indeed, I thought it myself. कहा, किसको? He looked at me more closely. फिर उसने मुझे फिर से देखा दोबारा से. You haven't changed, पर तुम तो बिल्कुल नहीं बदले. Neither have you. मेरा तुम भी नहीं बदले. And all the time I was wondering, और बहुत देर तक मैं सोचता रहा कि मैं ये है कौन. मैं तो नहीं जानता इसके बारे में, मैंने एडम से नहीं सुना. आई couldn't recall him, बट बिल्कुल भी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ. ट्रू. आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू रिमेम्बर पीपल. मुझे ना याद राम याद नहीं रहते हैं वेरी ऑफन. तो इट्स टू हार्ड फॉर मी कि फेस रिकॉल करना. फ्रीक्वेंटली मैं पर्सन के अपीयरेंस रिकॉल नहीं कर पाता हूँ. एंड ऑफ कोर्स क्लोथ्स तो ऐसी चीज है जो कोई नोटिस ही नहीं करता. बट अपार्ट फ्रॉम दीज डिटेल्स कभी मैं किसी को नहीं भूलता. एंड मैं इस चीज के आई एम फील प्राउड. बट व्हेन इट डज हैपन दैट अ नेम और अ फेस एस्केप्स मी, कब हो गया. आई नेवर लॉस्ट माई प्रेजेंस ऑफ माइंड. कभी नहीं हो सकता कि मैं अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड खो दूं. आई नो, मुझे पता है सिचुएशन से कैसे डील करना है. तो इट ओनली नीड्स सिर्फ कूलनेस चाहिए. भले ही मैं उसको नहीं पहचान पा रहा हूँ, ना उसकी शक्ल ना उसका नेम, बट आई हैव माई प्रेजेंस ऑफ माइंड. सो बस इसको भी कूलनेस इंटेलेक्ट की जरूरत है और सब चीज नॉर्मल हो जाती है. माई फ्रेंड सेट डाउन, बैठ जाओ. इट्स अ लॉन्ग टाइम, हमें मिले हुए बहुत टाइम हो गया. लॉन्ग टाइम, आई रिपीटेड विद समथिंग ऑफ अ नोट ऑफ सैडनेस. मैं चाहता था कि वो फील करे दैट आई टू हैड सफर्ड फ्रॉम इट, कि मेरे को भी ऐसा लग रहा है. बट इट हैज गॉन वेरी क्विकली. बहुत जल्दी जल्दी चीज हुई. लाइक अ फ्लैश आई सेंटेड चेयरफुली. चेंज, उसने बोला. हाउ लाइफ गोज ऑन एंड वी लॉस्ट, कैसे कैसे लाइफ चलती चली जाती है और हम एक दूसरे से काफी दूर दूर चले जाते हैं एंड हम भूल जाते हैं. आई ऑफन थिंक अबाउट इट. समटाइम्स मैं सोचता हूँ, ही कंटिन्यूड, कि हमारा पूरा का पूरा ओल्ड गैंग कहाँ चला गया. सो डू आई, मैं भी यही सोचता हूँ. इनफैक्ट आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट. मैं भी इसी बारे में सोच रहा था अभी अभी. आई ऑलवेज फाइंड इन सर्कमस्टेंसेज लाइक दीज a man begins sooner or later talk to of the old gang के बारे में तो ये बात करेंगे ही. और बॉयज और क्राउड, जहाँ पर अपॉर्चुनिटी कम्स इन टूगेदर, पता लगेगा कि ये है कौन. डू यू एवर गो बैक टू ओल्ड प्लेस, कभी तुम वहां पे पुरानी जगहों पर वापस गए हो. नेवर, कभी नहीं. फ्लैटली दिस हैड टू बी एब्सोल्यूट. आई फेल्ट दैट वंस एंड फॉर ऑल ओल्ड प्लेस मस्ट बी रूल्ड आउट ऑफ द डिस्कशन टिल आई कुड डिस्कवर वेयर इट वाज. तो मैंने सोचा कि इस चीज बारे में बात ही नहीं करनी है ताकि वो दोबारा इस ओल्ड प्लेस कहाँ है कौन सी है उसके वहां तक पहुंचे. मैंने उसे ही खत्म कर दिया. नहीं, मैं तो कभी नहीं गया. नो, ही वेंट ऑन, आई सपोज यू हैड हार्डली केयर टू. नहीं, मैं तो गया था. नॉट नाउ, आई सेड वेरी जेंटली, बट बहुत पहले. मैं तो कभी नहीं गया. आई अंडरस्टैंड, आई बेग योर पार्डन. एंड देयर वाज साइलेंस. हो गया थोड़ी देर के लिए, वो चुप हो. सो फार आई हैड स्कोर्ड द फर्स्ट पॉइंट. देयर वाज एविडेंटली एक ओल्ड प्लेस थी जहां पर आई वुड हार्डली केयर टू गो. मैं नहीं जाता था. दैट वाज समथिंग टू बिल्ड ऑन. Presently, she began again. Yes, he said. I sometimes meet some of the old boys. मैं उनसे मिलता रहता हूँ, उनके बारे में बात हम करते हैं. What you are doing, तुम क्या कर रहे हो. Poor things, I thought, but I didn't say it.
आई न्यू इट वाज टाइम नाउ, ताकि बोल्ड स्ट्रोक लेने का टाइम था, तो आई यूज द मेथड मैंने यूज किया जो हमेशा मैं अप्लाई करता हूँ। आई स्ट्रक इन विद ग्रेट एनिमेशन। See, I said, where's Billy? Do you ever hear anything of Billy now? Billy कहाँ है? आपने सुना उसके बारे में कभी याद? It was really very safe line. Every old gang, क्योंकि हर पुराने गैंग में दोस्तों के बीच में एक बिली नाम बहुत कॉमन होता था। Yes, said my friend, sure, Billy is ranching out in Montana. मैंने उसको देखा था लास्ट शिकागो में स्प्रिंग में। वो 200 पाउंड्स उसका वेट है and you wouldn't know him. No, I certainly wouldn't. I murmured to myself. And where's Petty? I said this was safe ground क्योंकि हमेशा एक पेटी भी होती है। You mean Billy's brother? He said. हाँ, yes, yes, Billy's brother Petty. हाँ, मैं उसके बारे में भी सोच रहा था। Oh, answered the unknown man. Old Petty's quite change हो चुका है। वो settled हो चुके हैं। Here he began to chuckle. फिर वो हंसने लगा। Why? Petty is married. फिर वो हंसने लगा। No, no. अंडर दी सर्कमस्टांसेस वो हमेशा सपोज कि बहुत ही फनी हो जाता है जब ऐसा पॉइंट अराइज हो जाए कि वो चेंज हो गया तो उसे पूछेगा वो मैरिड है, तो ही स्टार्टेड लाफिंग। फिर फनी, इफ अ मैन हैज गॉट मैरिड, माय फ्रेंड कंटिन्यू, आई ऑफन मेंट टू राइट टू यू, उसने कहा, सेड हिज वॉइस फॉलिंग टू बी कॉन्फिडेंशियल। मैं लिखने ही वाला था, स्पेशली जब मैंने आई हैव हर्ड ऑफ योर लॉस। आई रिमेन क्वाइट, मैं चुप रहा। व्हाट हैड आई लॉस्ट? मैंने क्या खो दिया? वाज इट मनी? क्या पैसे? और ऐसा कुछ था तो कितने पैसे थे? क्या मैंने खो दिया? आई वंडर्ड क्या इफ आई हैड रूइंड मी, कि मैंने अपने आप को बर्बाद कर दिया, या पार्टली कुछ तरीके से मैं सोचने लगा। वन कैन नेवर गेट ओवर अ लॉस लाइक दैट। अकेले दुख से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एविडेंटली आई वॉज प्लम रूइंड। आई सेड नथिंग एंड रिमेन अंडर कवर। लेकिन मैंने इस बात पर कोई आगे बोला नहीं। यस, द मैन वेंट ऑन, डेथ इज ऑलवेज सैड। डेथ तो हमेशा सैड ही होती है। डेथ? ओह, दैट वाज इट, वाज इट? आई ऑलमोस्ट हिकअप्ड विद जॉय। वो एकदम धसका सा जैसे हंसते हैं, ही लाफ्ड लाइक विद जॉय। दैट वाज इजी। हैंडलिंग अ केस ऑफ डेथ इन कन्वर्सेशन एक सिंप्लिसिटी है। वन हैज टू सिट, जबकि डेथ की कोई बात आए, जब तुम जानते ना हो तो बिल्कुल चुप हो जाओ एंड वेट टू फाइंड आउट कि कौन मरा, किसकी डेथ की बात हो रही है। तो नहीं पता था उनको। यस, आई मर्मर्ड, वेरी सैड। बट उसकी अदर साइड भी तो होती है। वेरी ट्रू, स्पेशली ऑफ कोर्स उस एज पर, एज यू से एट दैट एज, आफ्टर सच अ लाइफ, strong and bright to the last. I suppose, he continued very sympathetically. Yes, I said, falling on sure ground, able to sit up in bed and smoke within a few days of time. What? He said, perplexed. क्या तुम्हारी grandmother? मतलब उसने कहा smoke. My grandmother, that was it. अच्छा, my grandmother. Pardon me, I said, provoked at my own stupidity. When I say smoke, I mean smoke का मतलब कि I'm able to कि मैं बैठता हूँ, so I'll smoke. Habit he had, being read to and being smoked to, only thing that seemed to compose her. As I said this, I could feel the train जो है वो धीरे हो रही है। My friend बहुत मैं quickly देखता है मेरी तरफ, विंडो के बाहर देख रहा होता है। His face was agitated. Now great heavens, उसने, that's the junction आ गया। I have missed, मैंने अपना stop ही miss कर दिया। तो मुझे लास्ट स्टेशन पर उतरना था। Say Potter. So he called out in the alleyway. How long? हम कितनी देर तक यहाँ रुकेंगे? 2 मिनट। 2 मिनट सर, कॉल्ड अ वॉइस बैक। नाउ वो लेट हो चुकी थी। शी इज मेकिंग अप टाइम। My friend had hopped up now and had pulled out a bunch of keys and was fumbling at the lock, अपने सूटकेस का लॉक खोलने लगा। I'll have to wire back or something, उसने बोला, confused. Stop, my money is in the suitcase, मेरे पैसे हैं सूटकेस। My one fear now कि वो fail to get off, वो खुलेगा नहीं। Here I said, pulling some money out of my pocket, से पैसे निकाले। Don't bother, don't worry, here's some money, तुम्हें कुछ पैसे हैं, thanks, उसने कहा, grabbing the roll of money out of my hand। और एक्साइटमेंट में उसने सारे ले लिए पैसे। अब वो ट्रेन से उतर गया। आई सॉ हिम थ्रू द, मैंने उसे विंडो से देखा कि वो वेटिंग रूम की तरफ जा रहा है, और ही डिडंट सीम टू बी गोइंग वेरी फास्ट। आई वेटेड। Porters were calling, all aboard, all aboard. There was the clang of a bell, a hiss of a steam. A second में train was off. Idiot thought he missed it, and there was his $50 suitcase जो सीट पर रखा हुआ था। आई वेटेड, लुकिंग, विंडो के बाहर मैं देखता रहा, वंडरिंग कि वो मैन कौन था। एनीवे, फिर मैंने पॉटर की आवाज सुनी। ही एविडेंटली वाज गाइडिंग, किसी को गाइड कर रहा था थ्रू द कार। लुक्ड ऑल थ्रू द कार फॉर इट सर, ही वाज सेइंग।
I left it on the seat in the car. There behind my wife said the angry voice of a stranger. A well dressed man chose to put his head on the door of the compartment. फिर उसका फेस भी beamed all at once with recognition, but it was not for me. मेरे लिए नहीं था, वो मुझे नहीं पहचान रहे थे. It was for the सूटकेस की तरफ वो देखकर उसके बारे में बात कर रहे. Ah, there it is. वो रोने लगा. He's seizing it, carrying it off. I sank back in dismay. The old gang, Betty's marriage, my grandmother's death, great heavens, and my money. I saw it all. The other man was making talk too and making it with a purposely वो ये सब कर रहे थे. Tongue. And next time that I fall into talk with a casual stranger in our car, I shall not try to be quiet. So extraordinarily clever. Fun fact: the term pullman for a train compartment comes from Pullman Company, famous for designing luxurious train cars बनाए थे हैं वो 19 ये कार्स जो है वो रोलिंग होटल्स की तरह होती है होटल्स जो व्हील्स पर चलते हैं vocabulary voice broke out all over his face was fully expressed by his face vigorously enthusiastically didn't know him from Adam an expression we used to say, I don't know him at a name or face escapes me if I forget a person or name never lose my presence of mind I remain calm and behave normally contented agreed gather to know once and for all completely. A bold stroke, a bold or risky step that is to begin questioning him, know who he really is. Struck in with, spoke very confidently, great animation ranching, taking care of a ranch or large farm in which animals like cows, horses, sheep are bred. Plump completely, what hiccups, simplicity itself, very simple or easy. Perplexed, not understanding something confused. Provoked at my own stupidity, angry at my own mistake, agitated, anxious, alleyway, narrow passage in the compartment of the train. Fumbling, struggling to open the lock, wire back, send money from one bank to another, telegraphically. Gasped, spoke anxiously because he couldn't open the lock and train was about to. All aboard, all abroad, that is, everyone get in. Dismay, a strong feeling of disappointment and sadness. Tongue, I felt cheated through the pretext. Engage and evaluate, let us assess. Try true and false. Narrator immediately recognized the man who entered the compartment. False. The other man mentioned that he occasionally met people from the old gang and wondered about the narrator. False. The narrator felt that the man was trying to deceive him by making up stories about the old gang. True. The narrator did not know how long that man was a stranger trying to deceive him. False. Let's do the fill in the blanks. The narrator tried to identify the man by asking about his dash from the past, old gang. The man's suitcase was described as being worth $3, which was placed on the seat. The narrator gave the man some money out of his own pocket when the man struggled with his suitcase. The narrator discovered the truth about the man when he saw the face of the suitcase. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll see you next week. Bye. Take care.